नॉमिनेशन का पैसा नॉमिनी का नहीं होता है। बैंक्स कैन नॉट डिनाई और डिले अकाउंट ओपनिंग फॉर नॉट मेकिंग नॉमिनेशन। तो मेरे मरने के बाद तो बेटी के अकाउंट में 40 लाख, जो सबसे अच्छा बेटा है उसके अकाउंट में 30 लाख, मतलब सेटल होगा। IBPS RRB Scale 2 Scale 3 exam is round the corner and your preparation should be at right pace. If you have not started yet preparing well, then we have the batch Ready Reckoner for you. In Ready Reckoner, we have all top MCQs for financial awareness and computer aptitude. You need to read only the focused content in order to grab the selection in this attempt itself. अगर RRB स्केल 2 स्केल 3 के लिए आपका प्रिपरेशन सही स्टेज पर नहीं है तो आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं RRB का रेडी रेकनर, जिसमें कंप्यूटर और फाइनेंशियल अवेयरनेस कवर होगा। साथ ही साथ for this batch we have a special offering for you, that is the hand picked homework which I am going to assign in your quiz section so that you don't miss the selection, you don't miss any chance of selection. 80 questions a day till your exam, handpicked by me, apart from your regular reading, is going to boost your selection chance. तो पहला चीज नॉमिनेशन फैसिलिटी के ऊपर कुछ रिसेंट अपडेट्स आए हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटी, यू गॉट, ऑल ऑफ यू न्यू दैट it has now been increased to 4 nominations per every deposit account, locker account and safe custody account, right? So where nomination is applicable, nomination is normally applicable in any deposit account, any safe deposit locker and safe custody. What is the difference between safe deposit locker and safe custody? Safe lockers are the higher, where a customer can hire a place inside the branch and it is being operated by the customer himself or herself. But the safe custody is given to the bank manager. It is in the vault of the bank, maintained, safeguarded by the bank itself. Also locker is safeguarded, but it is not operated by the bank manager, that is operated by the customer. ठीक है, सेफ लॉकर कस्टमर हैंडल करता है, सेपरेट वॉल्ट होता है उसके लिए, और सेफ कस्टडी, जैसे आपने गोल्ड लोन के लिए गोल्ड दिया है तो वो बैंक के सेफ कस्टडी में रहता है। सो दैट इज द डिफरेंस। सो इन 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ऑल्सो in proprietorship account it is also equivalent to a deposit account, individual account, so there also nomination is applicable. So now when we talk about nomination, 3 kinds of accounts: account, deposit accounts, term deposit or demand deposit, safe deposit locker and safe custody. So from 1st of November onwards there are new mandatory rules. Up to 4 nomination is allowed, and if somebody wants he can also nominate nobody. Okay, nomination is mandatory? No. Banks must inform every new customer about the benefits of having nomination. What is the major benefit of having nomination? It will not slip into unclaimed account after the death of the customer. Deceased होने पर बहुत सारा unclaimed deposit है. This is a headache for the government of India. So if you plan well, then your estate will be managed. And who is a nominee? Nominee is a trustee who manages the estate, but the money belongs to the legal heir. Okay, if the customer doesn't wish to nominate, then what bank must do? Bank must get a written declaration that he don't want to nominate anybody, or if he refuses, that refusal has to be mentioned in the account opening form and has to be signed by the customer. Banks cannot deny or delay account opening for not making nomination. So now we all learn ki, and Reserve Bank of India has said, please motivate customers to have up to 4 nominees. तो आप बोलेंगे कि नहीं सर 4 नॉमिनी तो मैंडेटरी है, आप एक भी नहीं दे रहे हो, हम आपका खाता नहीं खोलेंगे। ऐसा नहीं है। Citing that reason, you cannot deny customers that service of opening an account. So new operational instructions: bank must keep system to record registration, cancellation and change of nomination. Give acknowledgement within 3 working days of receiving nomination or any changes in nomination. If rejected, inform customer in writing in 3 days. You must verify nomination complies with the act and rule. Banks must print the name of the nominee in term deposit receipts. अगर किसी ने फिक्स डिपॉजिट किया है तो उसके रिसीट के ऊपर जो टर्म डिपॉजिट का बॉन्ड होता है, एफडी आरडी के बॉन्ड के ऊपर नॉमिनी का नाम रहेगा। अगर करेंट अकाउंट ये सब वगैरह है तो पासबुक में भी नॉमिनी का नाम रहेगा। The name of nominee should be shown on all these documents. In case of nominee's death, if one of multiple nominees dies before receiving the amount, that nomination becomes invalid. Bank will then settle that portion as per rules and regulation of
नॉमिनेशन, ठीक है, मतलब 4 नॉमिनेशन है, कोई एक मर गया तो उसका नॉमिनेशन इनवैलिड हो गया. नाउ वी विल ट्रीट दैट एज इफ देयर आर 3 nominations. Up to 4 is not mandatory. Up to 4. If somebody has only one son, only one person in his life, then he will nominate to only one person. Okay. Banks cannot claim valid discharge if they make payment to a person based on nomination made under other laws. तो अगर बैंक को वैलिड डिस्चार्ज सर्टिफिकेट कोई कुछ देने की जरूरत नहीं अगर नॉमिनी को उसने पैसा दिया है. Banks must educate and advertise benefits of nomination. Banks must ensure account opening or locker forms include clear nomination section. So nomination should be clear. Okay. Section 45ZA of Banking Regulation Act, you should have nomination facility. Okay. So successive nomination comes under section 45ZG. नॉमिनेशन इज शेयर्ड अमंग ऑल नॉमिनीज इन डिक्लेयर्ड प्रोपोर्शन. अगर साइमल्टेनियस नॉमिनी है, साइमल्टेनियस नॉमिनी मीन्स 4 nominees are there, somebody has 10% share, somebody has 20, somebody has 50, likewise, that is simultaneous nomination. Successive nomination means if one dies, then money goes to the second person. If second person dies, money goes to the third person. If all the previous 3 dies, then money will go to the fourth person. Okay. So that is section 45ZA. And this is 2 types of nominee, successive nominee, simultaneous nominee. I have said in a glance whatever we have read. Now we can have 4 nominees. Nomination in deposit account governed by section 45ZA, 45ZB and 45ZG. Locker is governed at 45ZC. Safe custody is governed at 45ZG. Okay. Bank must inform customers about nomination. If customer declines, then what you have to do? You have to take a written declaration. Bank, if one nominee dies before receiving the deposit, only that nominee's nomination becomes invalid. बाकी nomination intact रहेगा. अगर 4 नॉमिनी है, एक मर गया तो उस नॉमिनी का पोर्शन जो है वो इनवैलिड हो जाएगा as if there was no nomination in that portion, right? But in rest cases nomination will be treated as valid. ठीक है. बैंक्स मस्ट हैव सिस्टम. मान लीजिए किसी के अकाउंट में 1 लाख रुपीज है, somebody is having 1 lakh rupees. There are 2 nominees. For first nominee 30% stake is given, second nominee 70% stake is given, right? The first nominee dies, this nominee is alive. When deceased claim settlement will be done, you will call this nominee or this 70% person will come to the bank and can claim 70,000 rupees. Okay. For the settlement of rest 30,000 rupees, you have to call for legal heir certificates and everything as if there was no nomination for that person. बैंक बोल रहा है कि अगर साइमल्टेनियस नॉमिनेशन है, किसी का 4 नॉमिनी मैक्सिमम हो सकता है. मान लीजिए इस केस में 2 नॉमिनी है, एक का 30% हिस्सा है, दूसरे का 70%. 30% वाला मर गया, 70% वाला बैंक में आकर नॉमिनेशन क्लेम करता है, डिसीज्ड क्लेम सेटलमेंट करना चाहता है, तो उसके अकाउंट में 70,000 चला जाएगा. बाकी 30,000 कैसे सेटल होगा? बाकी 30,000 वैसे ही सेटल होगा जैसे कि उस अमाउंट में, उस अकाउंट में कोई नॉमिनी नहीं था. जब कोई नॉमिनी नहीं होता है तो क्या होता है? सितंबर महीने के आरबीआई सर्कुलर में हमने बात किया है, न्यू रूल ऑन डिसीज्ड क्लेम सेटलमेंट. आपको लीगल हेयर सर्टिफिकेट वगैरह लाना पड़ेगा. क्लियर? I hope it is clear to all of you now. Right guys? Clear? Successive nominee simultaneous मतलब somebody has 10%, 20%, 10%, 30%, कितना हुआ? 60, 40% means I have 4 sons. तो मैं सक्सेसिव नॉमिनेशन, साइमल्टेनियस नॉमिनेशन कर लूंगा. बड़े बेटे के नाम पे 20%, जो सबसे घटिया बेटा है मेरा उसके नाम पे 10%, जो थोड़ा अच्छा होनहार बेटा है वो 30%. मान लीजिए बेटी भी एक है मेरा, तो सी इज वेरी फॉन्ड टू मी, सो आई विल गिव हर 40% नॉमिनेशन. तो मेरे मरने के बाद अगर मेरे अकाउंट में 1 करोड़ है तो बेटी के अकाउंट में 40 लाख, जो सबसे अच्छा बेटा है उसके अकाउंट में 30 लाख, मतलब सेटल होगा. बाद में वो जो नॉमिनेशन का पैसा नॉमिनी का नहीं होता है,
डिसीज्ड का पैसा नॉमिनी का नहीं होता है, वो तो आपको सबको पता है, बार बार मैंने बात किया है। तो वो पैसा किसका होता है? वो पैसा लीगल हेयर का होता है। जो लीगल हेयर सर्टिफिकेट में जिस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए बच्चों के बीच, तो बाद में जाके आप सेटल करिए, या फिर उस नॉमिनेशन को देख कर के चलिए पिताजी ने 40% आपके नाम पे रखा था तो आप 40 लाख ले लीजिए। सो दिस इज साइमल्टेनियस नॉमिनेशन। सक्सेसिव नॉमिनेशन में मतलब लॉकर के केस में होगा सक्सेसिव नॉमिनेशन, मींस इफ आई डाई, फर्स्ट नॉमिनी, फर्स्ट नॉमिनी इज माय गर्ल चाइल्ड, सी कैन ऑपरेट द लॉकर। ठीक है। अगर उसका भी देहांत हो जाता है तो सेकंड जो चाइल्ड है, अगर सेकंड नॉमिनी है वो आएगा। उसका भी डेथ हो जाता है, थर्ड नॉमिनी आएगा। उसका भी डेथ हो जाता है तो फोर्थ नॉमिनी होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि चारों के चार नॉमिनी मर जाएंगे। ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। Who is permitted by RBI to open and maintain foreign currency account outside India? FCA account बाहर कौन ओपन कर सकता है? आप और हम कर सकते हैं क्या? नो, रेसिडेंट इंडियन एक्सपोर्टर्स कैन ओपन FCA account outside India. RBI simplifies closure procedures for ADPMS, IDPMS, and that applies for the entries up to what amount? C, rupees 10 lakhs. What is the maximum time allowed for completing an MTT as per the extant RBI norms? MTT को कंप्लीट करने के लिए क्या टाइमलाइन है? 9 months का टाइमलाइन है। आफ्टर हाउ लॉन्ग विल ए डेलीगेटेड IoT डिवाइस विल बी ऑटो रिवोक्ड? अगर आपने स्मार्ट वॉच को ऑथराइज किया था पेमेंट करने के लिए और आप यूज नहीं कर रहे हैं कुछ दिनों से, तो कितने दिनों के बाद उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा? यस, आफ्टर 6 months इट विल बी ऑटो रिवोक्ड।